बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट बेस्ड एथिक्स। सिर्फ इसी स्लाइड को हम डिस्कस करेंगे कि राइट बेस्ड एथिक्स होता क्या है। सबसे पहले राइट बेस्ड एथिक्स में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं: द राइट टू लाइफ, द राइट टू परस्यू हैप्पीनेस, द राइट टू लॉयर, द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इन 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या कहते हैं ये इनका मतलब क्या है हमारे पास, और इनका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द राइट टू लाइफ होता क्या है। ठीक है, हमारे पास राइट बेस्ड एथिक्स जो है ये क्यों काम आते हैं। जो एथिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें राइट बेस्ड एथिक्स क्या काम करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी बेसिकली जो एथिक्स होती है क्या। ठीक है, राइट बेस्ड डिफाइन करेंगे हम, इस बारे में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट देते हैं कि द राइट टू लाइफ। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम जो है ये चेक करेंगे राइट बेस्ड एथिक्स होता क्या है। तो राइट बेस्ड एथिक्स जो होता है ना, बेसिकली इसको हम कहते हैं डेंटोलॉजिकल एथिक्स। ये एक तरह से एम्फसाइज करता है कि जो चीज हमारे पास राइटनेस, रॉन्गनेस themselves, regardless of their consequences, जो चीज ठीक। डेंटोलॉजिकल एथिक्स क्या होता है? डेंटोलॉजिकल एथिक्स जिस हमारे पास अपनी डेली लाइफ में हम काम सही करते हैं, सही तरीके से करते हैं, और जो काम हम गलत तरीके से करते हैं, वो जो एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं उसको डेंटोलॉजिकल एथिक्स बोला जाता है। ठीक है, उसमें अगर हम फोकस करें ड्यूटीज को, प्रिंसिपल्स को और मॉरल ड्यूटीज को या मॉरल रूल्स को, तो अगर हम राइट बेस्ड एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्फसाइज करते हैं किसी सर्टेन मॉरल प्रिंसिपल्स को या किसी सेट ऑफ रूल को कंसीडर करते हैं, तो वो हमारे लिए उस प्रिंसिपल का जानना जरूरी है कि वो जो रूल्स या प्रिंसिपल जो डिफाइन हुए हुए हैं या ये वो ड्राइव हुए हुए हैं हमारे रिलीजियस बेस में हुए हैं, वो कौन से रिलीजियस बिलीव्स हैं, फिलोसफिकल रीजनिंग कौन सी है, और हमारे सोसाइटी नॉर्म्स वो कौन सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज आ जाती है कि राइट बेस्ड एथिक्स होता क्या है। तो राइट बेस्ड एथिक्स हम ये भी कह देते हैं, इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। राइट बेस्ड एथिक्स हम ये हैं कि यहाँ से DEONTOLOGICL डेंटोलॉजिकल एथिक्स भी कहा जाता है इसको। और ये हमारे पास ये बताता है कि क्या चीज़ हमारे पास राइट है और क्या चीज़ हमारे पास रॉन्ग्स हैं जो हम अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो उसको क्या करता है वो बताता है। और ये हमारे पास ज़्यादातर में फोकस करता है ड्यूटीज़ को फोकस करता है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जिस तरह से हम पेश करते हैं, जो हमारे जो एथिकल बिहेवियर होता है। ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जो ड्यूटीज़ होती है। ठीक है, और जो हमारे जो मॉरल रूल्स हैं, ठीक है, उनको ये डिस्क्राइब करता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, अगर हम देखा जाए कि हमारे पास जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स किस चीज़ से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली ड्राइव हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मॉरल प्रिंसिपल है, वो हमारे बिलीव्स हैं। जैसे हम अगर हम कहें कि किसी शख्स का ईमान जो मतलब एथिकल बिलीफ जो है, रिलीजियस बिलीफ होते हैं, तो हर एक जो है मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बिलीफ्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हर रिलीजन का डिफरेंट, हर बंदे का मुख्तलिफ बिलीफ्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हर रिलीजन्स के बेस्ड में क्या कहते हैं, मुख्तलिफ क्या कहते हैं फिलोसफी होती है, मुख्तलिफ क्या कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग होती है। जो चीज़ जो फिलोसफिकल रीजनिंग होती है और सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जो कि हमारे जो रेगुलर बेसिस में अगर कोई सोसाइटी जिस तरह से चल रहा है, सोसाइटी जिस तरह से एक्शन परफॉर्म करती है, वो जो है ये प्रिंसिपल्स जो है रूल सेट हुए होते हैं, ये इनसे जो ड्राइव हुए हैं। बेसिकली हमारे पास राइट बेस्ड एथिक्स जो है ये ड्राइव हुई है, सच एज आप रिलीजियस बिलीफ्स कह सकते हैं, फिलोसफिकल रीजनिंग जो कि हम इसी चीज़ डिस्कस की थी कि सोसाइटी के नॉर्म्स। अच्छा, अगर हम डिस्कस करते हैं कि एक की आइडिया अगर हम लें कि राइट बेस्ड एथिक्स के हिसाब से अगर हम कोई की आइडिया लें कि क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, तो हम उसके आउटकम्स पर होल्ड करते हैं कि उसके नतीजे हमारे लिए क्या निकल रहे हैं। If we say that there is a contrast in ethical theories such as utilitarianism, जो कि फोकस करता है consequences और outcomes of the actions, जो कि हमारे जो actions होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं उसके जो outcomes होते हैं, जो कि हम actions के हिसाब से हम नतीजे जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्शन ठीक है या गलत है, और उसके हिसाब से हम बेस्ड करते हैं कि हमारे पास एथिक्स जो है ये किस तरह से रिलाई कर रहा है। अगर हम इसकी मिसाल दी जाए तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स मॉरली झूठ बोल रहा है या फिर गलत को ठीक कह रहा है, जो गलत है वो गलत को झूठ बोल के बता रहा है कि ये चीज़ जो है ना ये मैंने ठीक किया, ठीक है, उसको पॉजिटिव ले रहा है। ठीक है, एक काम जो है वो गलत है, ठीक है, उस गलत पर झूठ बोल रहा है। ठीक है, उस गलत पर झूठ बोलने के बाद वो बता रहा है कि उसको पॉजिटिव तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज अगर हम कोई चीज़ देखते हैं कि ये चीज़ वायलेट कर रही है किसी मॉरल प्रिंसिपल को या किसी मॉरल ड्यूटी को, तो सच एज ट्रूथफुलनेस या ऑनेस्टी कह सकते हैं।
कुछ लोग उसको प्रोपोनेंट्स ऑफ द राइट बेस्ड एथिक्स कहते हैं, जिसको हम थ्योरी कहते हैं। टेक्नोलॉजी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉरल ड्यूटीज। हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी एक तरह से मॉरल ड्यूटीज हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द राइट टू लाइफ। देखिए, राइट टू लाइफ होता क्या है। बेसिकली अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करूँ, द राइट टू लाइफ इज अ बेसिक प्रिंसिपल दैट सेज एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव and that their life should be protected and respected, to means that no one should intentionally take away someone else's life without a justifiable reason। आसान लफ्ज़ों में कि एक एक बंदा है, ठीक है, उसकी जो राइट्स हैं, उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो उसको चाहिए कि वो बताए कि हर बंदा जो है वो उसकी राइट है कि वो अपने तौर तरीके से रह सकता है, ठीक है। वो जिस तरह से रहना चाहे, वो जिस तरह से प्रोटेक्ट या रिस्पेक्ट अपना मतलब किया चाहे, वो सही है कि वो अपनी इस राइट को अवेल करे, उसकी उसको राइट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो है ना, इंटेंशनली बंदा जो है कोई किसी से जस्टिफाई नहीं कर सकता कोई रीज़न, ठीक है। तो दूसरे नंबर आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट टू लाइफ। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करें तो द राइट to life is considered extremely important because it recognizes the inherent value of every individual and their right to be free from. It ensures that people are protected from violence, unjust killing, and other threats to their lives. In this setting, we can say that the importance of life to right, importance of life, and the importance of every person have the importance that he can gain the right. So it is considered extremely important that what is the importance, because every person can recognize the inherent value from every individual, so that every person have a free from harm, that no one can kill and no one can be make the harm to that person, because he is right that he can make their life better and make their life by their own thinking and by their own probably protected from the violence and from the killing and from the threats, so he can live life freely and with freedom. No other person can harm them. No other person can be easily attacked and can put their own persuade them that you can do this and this. So they can have a free mindset, and there is no आप कुछ कह सकते हैं कि उसमें कोई भी खतरा महसूस नहीं करेगा. No danger to live their lives. नंबर थर्ड में अगर हम कहें तो लीगल एंड एथिकल बेसिस, ये एक हेडिंग है, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ that if a person who have international human rights documents like the Universal Declaration of the Human Rights, then many countries also include their own laws and contribution. That's in this explanation that if a person, even if a legal ethics and basis are from it's a way of the government level, that if main thing is included in the country, so the other country should also make the universal declare that the human rights is, for example, that the United Nations work on the human rights, work on the universal declare that the human right can give for each and every person, that the government and for the societies for the responsibility to defend people's life. So obligations and duties. Okay, if I summarize this all, the conclusion that the right to right life is a simple but crucial principle that assert everyone's life that can be protected from harm. That a person can be live freely with the human right documents, the worldwide and place responsibilities in both the individual and authorized rights. So debates can the issue that underscores the value and importance of every person's existence. Now further in the same point, we will discuss some of the right to purpose happiness. So we will explain with the I have opened the notepad. I will explain this here. So I will make just the key points. So first of all, we will discuss about the right to pursue happiness. What is this? What this is meant? We can say that a concept that the idea of individual have freedom to seek a personal fulfillment and well-being is the main definition. That the right to pursue happiness is a concept, is an idea that individual have the freedom to seek personal fulfillment and well-being. It recognizes that the people should have the opportunity to lead fulfilling lives and make choices that they contribute to their happiness. That means that they want the satisfaction. So if we discuss about the significance that what that mean the right to pursue happiness, we can emphasize that the importance of the personal autonomy and self-determination. Importance of personal autonomy and self-determination. What is that? What is this terminology is meant? Acknowledgement that individual have a desire that should be free to pursue their own path to happiness. That person wants to
want that happiness, they want to pursue the happiness, they have a free path, can take that happiness, cannot be hanging from the other persons. We can have the relationship of individual freedom being is the closest thing to the individual freedom and well-being. That the people should have the freedom, that every person have a freedom to make the choice to make their own life and have passion to engage that enjoy their meaningful life. So first of all, we will discuss that. Now, a little bit, 2 3 words I will discuss that. What I will write: the right of pursue happiness. What does it mean? This is a one point. Uh,
Okay, so certainly we have the key points. So we are discussing about the right to the lawyer. What does it mean? Certainly we have the key points regarding to the right to the lawyer from the ethical perspective. So number one, we will discuss about the ethical principle. I will also make the note and I will show you here. Okay, so there are some important points which we will discuss here. Uh, the right to the lawyer. What does it mean? Ethical principle. The right to the lawyer ensures the fairness and just legal process. The the number two is access to legal representation. It provides equal access to legal expertise regardless of financial knowledge of the law. Number three is balancing power dynamic. It prevents abuse of power by balancing resources between the prosecution and the accused. Criminal proceeding, crucial for protecting rights, aiding understanding, and enabling an effective defense in criminal cases. Civil proceedings ensure the fair representation, especially in significant civil matters. Number six is publicly funded legal, provide access to legal representation for economically disadvantaged individuals. Number seven is action and regulation. Limited temporary restrictions may apply in the emergencies or cases involving national security, subject to narrow definition and review. So I will make the explanation of the first part is ethical. What is ethical principle? The right to the lawyer is in the ethical principle of fair and ensuring just legal process. That every lawyer in the court is surrounded by the principles of the fairness, that the legal process, that every person, the court should have make the response in the procedure of make the fair result for the every person, even if they are, because when a person makes some issues that may contact duty, that that person gave a proper definition and proper way, the fairness of the way in the legal process that of the lawyer. So the number two is access to legal representation. Every individual equal access to legal expertise and representation, regardless of their financial status or knowledge of the law. It's a representation of legal access to legal representation, that every person have a that can be present the norms, the particular norms, that how they pursue their life. They act as a proper way, that the person who is performing their own duty is a proper way that can be easily ensured, make the legal definition, that a person, if a person have some document and give me that document, so every person have an equal access that can make that document or legal document of that thing. So this represent this. Moreover, we will discuss about the file by balancing power dynamics. Okay, these are some of the things. So now we will discuss about the right of a person to be treat with the respected. The right of a person to be treated with respected. What does it mean? The right, every person have right to be treated with respect in the human right that acknowledges the dignity and worth of every individual. That means that the treating others with respect is the principle of equality. That all individuals have deserved the fair and equal treatment of their background, characteristics, and their own beliefs and all. That if we say that the dignity and autonomy, respecting others, respecting to the others, that means that the dignity and inherit the dignity and the autonomy that makes the choice and decision that affect their own lives. The if we discuss the discrimination, non-discrimination, respecting others involve refraining from discriminatory actions based on factors such as race, gender, religion, nationality, and a protected characteristic. Respectful treatment requires the effective communication, active listening, and empathy towards others, considering their perspectives and emotions. Now we will discuss about the consent and boundaries. Respecting others includes seeking and obtaining consents, recognizing the personal boundaries, and refraining from actions that may cause harm or discomfort. Now we will discuss about what are the social environments.
Right to treat with respect to settings, communal places, schools, public spaces, and relationship. Legal and ethical framework. Many legal systems and ethical codes recognize the importance of treating others with respect, establishing guidelines and protection to ensure its realization. Okay, these are some points which I discussed. The number one is the basic human rights. Number two is recognizing of equality. Number three is dignity and autonomy. And number four is non-discrimination. Number five is communication and empathy. Number six is consent and boundaries. Number seven is workplace and social environments. Number seven is legal and ethical frameworks. Number eight, workplace and social environments. Legal and ethical frameworks. Okay. Remember that these points, which I have told you, provided a brief overview of the right of the person to be treated with respect. The concept of respect can involve the various dimensions and considerations depending on the cultural and the social legal context in which it's applied.